मित्रों, मैं मुकेश पाटिल, आप देख रहे हैं स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। उसके क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि सेक्शन ए में इंक्लूड होती है। तो आपको ये लगातार ये तीसरा वीडियो हम आपको सामने रखने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा मतलब कि सेक्शन ए के अंदर तो मैच द कॉलन भी आता है, तो ये तीसरा वीडियो है अब तक, उसके अंदर मैच द कॉलन तो इंक्लूड है ही नहीं। तो मैच द कॉलन के लिए जो कि 5 मार्क्स का आता है 24 वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में, तो वो टोटल बहुत ही ज़्यादा मतलब हमने जो आईएमपी अलग अलग चैप्टर में से आईएमपी जो मैच दी कॉलन निकाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि सारे चैप्टर का कंबाइन एक ही वीडियो होगा। ओके, तो वो भी देखने के लिए हमारी चैनल पे बने रहें। लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज़ अनदर वर्ड यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के लिए में कौन सा दूसरा एक वर्ड यूज़ होता है आर्किटेक्चर के लिए संस्कृत वर्ड में? तो संस्कृत लैंग्वेज में यूज़ होता है वास्तु, वास्तुशास्त्र। वॉट वॉज बिल्ट इन लोथल टू फैसिलिटेट दिस शिप्स, तो डॉकयार्ड। इन विच लैंग्वेज आर स्टोन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव, तो ब्राह्मी। द सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड एट मोढेरा। विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद, तो ई मस्जिद नगीना। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉट इंक्लूड इन आर्किटेक्चर, तो फोर्ट्स एंड मिनरेट्स, हाउसेज एंड टाउन्स, टेम्पलेट्स एंड मॉस्क, स्कल्पचर ऑफ नटराज एंड राम हैविंग बो एंड एरो, all are included. Okay, on forts and minarets only are included. 7 number, which of the following is not appropriate in ancient Indian town planning? तो C, residence of common people situated on the lower part of town. 8, the meaning of Mohenjo-daro is B, the heap of deeds. 9, which the following pair is not correct? तो Gondal Rojdi, B is not included. 10 number, for student of school presented their opinions in discussion about sketch of stoops. Who is wrong in them? Ravi says the railing around the top of the oval shaped stoop is called harika. Pooja says elevated circular path around stoop is known as medi. Anvi says toran means entry of temple. Tanvi says a slightly elevated circular path around the temple of or place of worship is called प्रदक्षिणा पाथ. ए, रवि एंड अनवी, बी, ओनली अवी, सी, पूजा एंड तन्वी, डी, ऑल आर करेक्ट. तो ऑल आर करेक्ट. 11 नंबर, ए प्लेस इज द फर्स्ट प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. इट हैज़ ए सिंबल शोइंग ट्रिम्थ ऑफ रिलीजियन. विच प्लेस कैन इट बी? सी, अजंता. 12 नंबर, आइडेंटिफाई द पेयर विच इज़ नॉट करेक्ट. तो स्टोन इंस्क्रिप्शन देहरादून इज नॉट करेक्ट. 13 number, which of the following is not included in the art of architecture of Gupta period? तो B, statue of Mahavir Swami of Mathura. Fill in the blanks. First, the simple meaning of architecture is Vastu. Second, Harappa and Mohenjo-daro were important cities of Indus Valley civilization. Third number, the remains of Mohenjo-daro were discovered from Laranka district of Pakistan. Fourth number, drainage was the unique feature of town planning of Mohenjo-daro. Fifth number, the excavation of Dholavira was carried out in 1990 under the guidance of Ravindra Singh. Whether the following statements are true or false. First statement is skill of an architect is seen in the art of architecture. So true statement. Second, Gopuram word is used for architecture in Sanskrit language. So false statement. Third number, the spirit of paintings of Ajanta covers is Lord Buddha. So true statement. Fourth number, Modhera Sun temple is known as Black Pagoda. False statement. 5 number, the Delwara of Mount Abu are located in Rajasthan. So true statement. अरेंज फॉलोइंग इवेंट एज पर देयर टाइमलाइन. टाइमलाइन के हिसाब से उसको अरेंज करना है. ओके,
तो ऊपर जो 5 अलग अलग स्टेटमेंट दिए उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट टाइम के हिसाब से आएगा आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सन टेम्पल ऑफ मोटेरा। सेकंड आएगा एक्सकेवेशन एट मोहेंजोदड़ो। थर्ड आएगा डिस्कवरी ऑफ खम्बालिडा केव्स नियर गोंडल। फोर्थ आएगा के शास्त्री डिस्कवर्ड खापरा खोडिया केव्स इन कच्छ। और 5 नंबर आएगा एक्सकेवेशन ऑफ धोलावीरा सिटी टाउन। आइडेंटिफाई मी। फर्स्ट, माई स्किल इज टेस्टेड इन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्ट। सेकंड, माई टैलेंट इज टेस्टेड इन स्कल्पचर, तो स्कल्प्टर। थर्ड नंबर, आई एम कंसिडर्ड द एंट्रेंस गेटवे ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल, तो दिस इज कॉल्ड गोपुरम। फोर्थ नंबर, आई एम नोन एज कैपिटल ऑफ पल्लवास, तो कांची। फिफ्थ नंबर, माई आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एज सिद्धपुर, तो रुद्र हिमालय। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज फॉर व्हाट इज इंडिया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आंसर आएगा इंडिया इज फेमस फॉर रिच कल्चरल हेरिटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट हैज़ गिवन अ यूनिक आइडेंटिफाई टू इंडिया, तो द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज़ गिवन अ यूनिक आइडेंटिफाई टू इंडिया। थर्ड वन, नेम द इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ इंदुज वैली सिविलाइजेशन, तो मोहेंजोदड़ो हड़प्पा धोलावीरा एंड लोथल। फोर्थ नंबर, हु डिस्कवर्ड द एंशियंट रिमेन ऑफ हड़प्पा, तो दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द एंशियंट रिमेन ऑफ हड़प्पा अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मेक। 5 नंबर, फ्रॉम वेर द रिमेन ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड वैन, तो द रिमेन ऑफ हड़प्पा were discovered in 1921 from Montgomery in Punjab district near Harappa. 6 number, where did Indus Valley civilization blossom, the Indus Valley Sindhi Valley civilization blossom in the region of Sapt Sindhu. 7 number, why is the Indus Valley civilization called Harappa civilization, so the Indus Valley civilization is called Harappa civilization because its remains were first found from हड़प्पा। 8 नंबर, व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ लोथल, तो ये ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ लोथल, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ लोथल। 9 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, the stone was made smooth and shining by rubbing, religious orders were inscribed on it, this is called stone inscription। 10 number, where do we find pillar inscription in India, तो we see pillar inscription at Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Laria near Nadganj, Sanchi, Kasi, Patna, Bodhi Vruksha near Bodh Gaya। 11 number, where do we find stone inscription in India, तो we find stone inscription in Dehradun, Thane, Mumbai, Dholi, Jogada, Chennai, etc. in India। 12 number, what is the unique feature of stoop of Dravidian style, तो the stoop of Dravidian style of South India have shapes like semicircle and oval and bell shape। 13 number, which stups are the best example of Dravidian style of architecture, the stups at Nagarjun Kund and Amravati are the best specimen of Dravidian style of architecture। 14 number, king of which dynasty developed Dravidian style of architecture up to the great height, तो Chola king developed Dravidian style of architecture up to the great height। 15 number, name the caves in Maharashtra, तो अजंता इलोरा caves at Aurangabad and Elephanta caves near Mumbai are located in Maharashtra। 16 number, which caves are located at Odisha, तो उदयगिरी, खानगिरी and नीलगिरी caves are located near Bhubaneswar in Odisha। 17 number, which caves are located in Gujarat, तो खंबाड़िया near Gondal, Dhanak near Rajkot। 3 caves at Junagadh, Talaja, Sena are located in Gujarat। 18 number, how many group of caves are there in Junagadh, which are they, तो there are 3 group of caves in Junagadh। first group of Bhav Pyara caves, group of Uparkot, group of Khapra and Kodia caves। 19 number, how many caves are there in the group of Bhav Pyara caves, so there are 3 layers in the group of Bhav Pyara cave, there are total 16 caves, 4 in the first line, 7 in the second line and 5 in the third line।
20 number. How many pillars are there in the Khapra and Khodia caves? So there are 20 pillars in the Khapra and Khodia caves. 21 number. Where are Khambalida caves located? When are they discovered? So the caves of Khambalida are located at Khambalida near Gondal, 70 km away from Rajkot. Khambalida caves were discovered in 1959 AD. 2 number. By which other name Talaja cave known as? How many caves are there? So Talaja caves are also named as Taldwaj Giri. There are 30 caves. 23 number. Where are Dhanak caves situated? So Dhanak caves are situated in Dhanakgiri in Dhanak village of Upleta taluka of Rajkot district. 24 number. Where are Khapra Khodia caves of Kutch situated? How many caves are there? So Khapra Khodia caves are situated on the top of mountain near Old Patgad in Kutch of Lakhtar taluka. 25 number. Which is the famous pillar of Kalia Dungar caves? Mention its characteristic. So lion pillar is a famous pillar of Kalia Dungar. This pillar has been carved from a single rock. It is 11 feet tall. There is a statue of a lion with the two bodies and one mouth. 26 number. During whose rule were the chariot temples built? Mention its speciality. The chariot temples were built during the rule of Pallava kings in South India. These temples were carved out from a single rock and they have a chariot shapes. 27 number. Which are the best example of architecture of Kanchi? So the Kailasnath temple and Vaikut Perumal temple of Kanchi are the best example of architecture. 28 number. Name the best example of temple architecture. So the Bhumra Shiva temple near Jabalpur and the temples of Larkhan in Birjapur district are the best example of temple architecture. 29 number. Which statues are unique specimen of sculpture? So the copper statue of Lord Buddha in Nalanda, Sultanganj and the statue of Jan temple of Mathura are unique specimen of sculpture. 13 number. Whose contribution is most important in building temple in South India? Name the capital also. So the contribution of Pallava king is most important in building temple in South India. Kanchipuram was the capital of Pallava kings. 31 number. Name the capital of Chola dynasty. So Tanjore was the capital of Chola dynasty. 32 number. Which Gopuram was famous? The Gopuram of Kanchi and Madurai are famous. 33 number. Where is Meenakshi temple? How many Gopuram are there in this temple? Meenakshi temple is in Mumbai. It has 4 Gopuram. 34 number. Name the capital of Chandela rulers of Bundelkhand during medieval period. So Khajuraho was the capital of Chandela rulers of Bundelkhand during medieval period. 35 number. Who built the Khajuraho temples? So the Chandela king of Bundelkhand built the Khajuraho temples. 36 number. How many Jain temples are there in Rajgiri? Name them. So there are 5 Jain temples in Rajgiri. They are Vaibhav, Vipulachal, Ratnagiri, Udaygiri, Sarmangiri. 7 number. Who built the Sun Temple of Modera and when? So the Sun Temple of Modera was built by King Bhimdev I of Solanki dynasty in 1026 AD. ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय.